आवाज आती है? स्क्रीन विजिबल है? Yes. हाँ sir. Okay. So let's start the PMR spectroscopy. In that, we have studied the chemical shift value in earlier lecture. The one important things regarding these chemical shift values is that you have to remind two important things, that is the upfield and downfield. Okay, upfield and downfield. These two are the most important thing to remember in this case. Okay, means that there are two field. Okay, chemical shift values starting from 0, okay, to 1, 0 to 1 chemical shift value, or 0 to 10. So if value is increasing, means from 0 to 10 chemical shift value increasing, at that time we call it as a downfield. Always remember this called as the downfield, DOWN, downfield. When value is decreasing or value is becoming less, okay, at that time it is called as the upfield. Okay, up and down, these two word is important. When we are moving toward the 0 means upfield, and when we are moving towards the 10 meaning the maximum value, at that time it is called as a downfield. At the same times another word is also there, that is a shielding and deshielding. Okay, when value is increasing means value is in the downfield, at that time it is called as de-shielding. This is called as de-shielding. It is called as de-shielding. Means both the word down field and de-shielding started with D. These both are having the same meanings. At the same time, if value is decreasing means moves toward the 0, at that time we called it as a shielding. Okay, shielding, SHI, shielding. तो remember these two words. Okay, आपको समझ में आया shielding का मीनिंग क्या होगा? फिर कोई बोल सकता? When value is decreasing. हाँ, decreasing. At the same time it is another name, that is upfield. और जब वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एट डीशील्डिंग प्रोटॉन्स. डीशील्डिंग यानी प्रोटॉन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और उसको बोलेंगे हम इट विल बी फॉल ऑन द डाउन फील्ड. डाउन फील्ड में इसकी वैल्यू हमको मिलेंगे, डाउन फील्ड यानी इंक्रीजिंग वैल्यू में हमको इसकी वैल्यू मिलेंगे. तो ये वर्ड हमको इन बिटवीन कहीं ना कहीं आने वाले हैं, इसलिए इसका मीनिंग आप समझ लो. ओके, तो शील्डिंग एंड डीशील्डिंग, अप फील्ड एंड डाउन फील्ड. तो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे याद रखने के लिए ये है कि डाउन का डी से स्टार्ट होता है, डी शील्डिंग भी डी से स्टार्ट होता है, तो हम लोग याद रख सकते हैं इसको यहाँ पर. ये हो गई एक चीज अंडरस्टैंड करने की. ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको नेक्स्ट पढ़ना है, दैट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड. अब रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या यूज करेंगे इन केस ऑफ द PMR, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो रेफरेंस कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा जिससे हम क्या करेंगे, उसको कंपैरिजन करेंगे. सो जनरली टेट्रामिथिलसिलेन, जिसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है, सिलिकॉन इन इनसाइड and 3 CH3 group are attached. Silicon is tetrahedral in nature, okay, having the carbon family members. Silicon having the 4 groups CH3 CH3 CH3, that is tetramethylsilane. So we are using as a reference standard tetramethylsilane, using as a reference standard in the okay, PMR, proton magnetic resonance spectroscopy. Why we are using this tetramethylsilane, TMS? Why we selected? The reasons are that they are non-toxic liquids, means this is safe to use. It is inert, means does not react with the compound being analyzed. जो भी कंपाउंड के साथ एनालिसिस के कंपाउंड के साथ इसको ऐड करेंगे तब ये कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ओके, हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से कैन बी डिस्टिल्ड आउट ऑफ एंड यूज्ड अगेन, रीयूज कर सकते हैं हम इसको. ऑल द हाइड्रोजन आइटम्स आर केमिकली इक्विवेलेंट. केमिकली इक्विवेलेंट का मैंने एग्जांपल आपको बताया था. केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन किसको बोलते हैं? जिसका सराउंडिंग सेम है. तो यहाँ पर हर ग्रुप जो भी CH3 का ग्रुप है सिलियन का, उसका एनवायरमेंट सेम होने की वजह से सारे के सारे प्रोटॉन्स, 4 CH3 ग्रुप के प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट टाइप से प्रोटॉन्स है. तो सब मिलकर यहाँ पर एक ही पीक देंगे और वो पीक रहेगा 12 प्रोटॉन का पीक. यानी टोटल 12 प्रोटॉन जो है उसका एक ही पीक हमको यहाँ पर मिलेगा. So all the hydrogen atoms are chemically equivalent, produces a single peak. Okay, 12 hydrogen, so it is produces the intense peak. इसके intensity बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. Don't need to use a much. ओके ये इंटरफेयर कहीं पे नहीं करेगा, सेपरेट आउट अलग से रहेगा, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. A signal is outside the range shown by the most protons, means won't observe main signals. So इसको जनरली क्या करते हैं, फिर given the chemical shift of delta is equal to 0, इसकी वैल्यू हम रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हम 0 देंगे. द पोजिशन ऑफ ऑल द अदर सिग्नल इज मेजर रिलेटिव टू द TMS, और इसके रिलेशन में बाकी चीजों के हम जो है क्या करते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो है कि मॉलिक्यूल कंटेन 4 मिथिल ग्रुप्स अटैच टू अ सिलिकॉन एटम इन द टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट एंड ऑल द 4 CH3 groups are equivalent in nature, having the single and sharp peak, okay, having the highest intensity of that particular peak, and that is considered as a standard for the, as a reference standard for the proton magnetic resonance spectroscopy. तो इसके बारे में हमारे नोट्स में भी दिया हुआ है. ओके, रेफरेंस स्टैंडर्ड बोल के हम इसको यूज कर रहे हैं. यहाँ पर देखिए हमने फिर से एक डायग्राम निकाली है नीचे, जिसके ऊपर हमने बताया है कि यहाँ पे डाउन फील्ड और अप फील्ड का मीनिंग क्या होता है. ओके, अप फील्ड और शील्डिंग एक है, डाउन फील्ड और डी शील्डिंग एक है. तो जनरली इसको जो है हम कंसिडर करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पॉइंट सॉल्वेंट. अभी सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे हम? सॉल्वेंट प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको सॉल्वेंट भी यूज करना पड़ता है. सो मोस्ट ऑफ द केसेस, मैक्सिमम केसेस में हम जो है टेट्रामिथिल सिलेन TMS, यही सॉल्वेंट बोलकर हम मैक्सिमम केसेस में हम यूज करते हैं. ओके, फॉर द मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट एंड आल्सो इज अ सॉल्वेंट. अब उसको सॉल्वेंट बोल के सिलेक्ट करने का रीजन क्या हो सकता है? तो रीजन उसके हो सकते हैं कि ये जो है टेट्रामिथिल सिलेन है, ये वोलाटाइल लिक्विड है. ओके, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो है. मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, डिजॉल्व इन इट, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं. ओके, इट कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट, or sample can be recovered, means if you put it in the evaporation dish, at that time it is easily evaporated, or you can separate out easily by the distillation process also. So sample can be recovered by the evaporation of the TMS, and it is miscible with the most of the organic solvents, and it is symmetrical, and all the 12 equivalent protons give rise to only one strong signals. That is the reasons behind that. So we are using a solvent as a TMS. So TMS is used as a solvent as well as TMS is used as a reference standard. तो दोनों चीजों के लिए भी हम जो है यहाँ पर TMS यूज कर सकते हैं. TMS के अलावा, ओके, another options is also there. Okay, so substance free from the proton should be used as a solvent. Okay, that is which does not be in absorptions or on NMR spectrum. Okay, no, not create any disturbance in the spectrum. That types of the solvent is used as a standard, okay, reference standard and standard solvent for the PMRs. Moreover, the solvent should be capable of dissolving at least, because it is a main function of the solvents to dissolve the compounds. So the solvent should be capable of dissolving at least 10% of the substance under the investigation, and the following solvents are commonly used. Following solvents are the commonly used in the PMR, NMR spectroscopy, that is the carbon tetrachloride CCl4 not having a single proton, carbon disulfide, okay, carbon
sulfide, tetrasulfide, okay, CS4. In that case, no single proton is there. Okay, deuterochloroforms means one hydrogen replaced by the deuteriums. So this is all not having a single protons. Hexachloroacetone not having the single protons. So if not having the protons means there is no chances of the interfere in the interpretation, means interfere in the spectrum. स्पेक्ट्रम के वैल्यू जो आएंगे उसमें इसकी पीक नहीं आएंगी, तो सॉल्वेंट बोल कर तो काम करेगा, डिजोल्व भी करेगा। जनरली रेफरेंस कंपाउंड जैसा कि टीएमएस हम जनरली हमेशा एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड और एज अ गुड सॉल्वेंट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम हमेशा यूज करते हैं। तो टीएमएस इज मोस्ट, ऑप्शन बहुत सारे हैं लेकिन हम टीएमएस ही हमेशा यूज करते हैं कि टीएमएस इज द बेस्ट सॉल्वेंट। अब इसके बारे में हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, सॉल्वेंट यूज फॉर द पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, सो यहाँ पर सब पॉइंट्स दिए वाले हैं। CS3/4 CI ये टीएमएस का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। ओके, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हम लोग उसको यहाँ पर यूज करते हैं। Okay, so in most of the cases TMS is used as a standard for the measurement of the chemical shift and also solvent because of the following reasons: it is a volatile liquids and many organic compounds dissolve in it. It can be used as a solvent. Sample can be recovered. Okay, it is miscible with the organic solvents. It is symmetrical and protons are highly shielded. Shielded means what is the meaning here? Photons are the highly shielded. What is the meaning of that shielded? What is the meaning of that particular shielded? यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है shielded का? हेलो, प्रोटॉन्स आर हाईली shielded in case of the tetramethylsilane. इसका मीनिंग क्या होता है? हेलो, हाईली shielded का मीनिंग समझ में आया ना आपके? मूविंग टुवर्ड्स द जीरो, नहीं। कम होते जाना, दैट इज हाईली shielded. फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। अब केमिकल शिफ्ट में कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं? Great. So there are the inductive effect, van der Waal shieldings, anisotropic effect, hydrogen bondings. These are the effects responsible and affecting the chemical shift. So next is the electronegativity and the inductive effect. How it is affect the chemical shift values. Here is the example is given here of the Cl, HCl. Electronegative items, chlorine attached with the carbons. So chlorine is the de-shielded, okay, and the protons, that is, it takes valence electron density away from the carbon, which in turn takes more density from hydrogen, means that it is the de-shielding types of the protons. If you see the chart of this chemical shift values, we find that the protons value is de-shielding, means value is continuously increasing. De-shielding moves protons resonance to the lower field and the higher delta values.
The points in the notes also there. The inductive effect decide the chemical shift value of the particular groups, electron withdrawing groups, the deshielding adjacent protons and giving the signals at the downfields, electron donating group shielding the adjacent protons and give the signal upfield. Okay, so in a bromobutanes electron with the withdrawing effects by Br it deshielded more on the alpha proton giving the signal delta is equal to 2.5 ppm, and this effect slightly affecting the values, okay, and become negligible at the furthest distance. And if the compound is having the more than one electron withdrawing group, the deshielding effect also increases. Means the here examples are given. Well, in the first example, the four are the hydrogens attached with the carbon. In the second, one hydrogen replaced by the chlorine atoms, means the chemical shift value is increases. In the second case, another hydrogen replaced by the one of the chlorine atoms, means value is again increases. And in the last example, that is the CCl3H, means three hydrogen replaced with the three halogen atom. At that time, the highest value of the chemical shift, that is delta, is equal to 7.1 ppm. So next parameter, important parameter, that is the anisotropic effect or magnetic anisotropy. So in this case, if the protons fall in the regions, two region is there. Okay, one is the direct region, that is the inductive effect fall at that region. Okay, that is the paramagnetic field, induced paramagnetic field. Okay, and diamagnetic field. So in case of the olefinic protons, in case of the olefinic protons, the protons are fall in the diamagnetic regions. So if these protons are fall in the diamagnetic regions, at that time value is also deshielded, means the value is increases continuously. So here is the description about the anisotropic effect of the or magnetic anisotropy, and effect of the current due to the circulation of the pi electron in the other parts of the molecule on shielding or deshieldings are called as anisotropic effect, and they are depend on the orientation of the proton relative to the induced magnetic field. And the acetylenic molecule is oriented perpendicular to the applied magnetic field. Then there is a and paramagnetic anisotropic effect on the shielding of the protons. So resultant diamagnetic effects or induced paramagnetic effect is produced in this case of the acetylenic protons. So this is another examples. Okay, if the molecule is parallel to the applied magnetic field, then there is a circulation of the electrons within the cylindrical electron cloud, and this induces the magnetic shielding or the acetylenic protons. So these are the two examples in which we can understand the effect of the surroundings on the chemical shift values.